मुद्दे जो बात करे हमारे समाज के हित की। जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है उसको कोई अब्यूज करे, वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी वहां। सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर। तो सुनना मत भूलें बदलता दौर, मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। ये दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बदलते दौर में मैं दानिश महाजन आपका स्वागत करता हूं। जी हां, आज रविवार का दिन है और रात के 9 बज चुके हैं और हम बदलता दौर लेकर आपकी सेवा में हाजिर हैं। इस बार का बदलता दौर कुछ अलग तरीके का है, तो वो किस तरीके का है हम आपको बता देते हैं और इस बार का टॉपिक क्या है और कौन हमारे आज के शो के पैनलिस्ट हैं। आज का जो टॉपिक है, बहुत सारे दोस्त अवेयर हैं और बहुत सारे दोस्त अवेयर नहीं भी हैं। चेन्नई में एक आंदोलन किया गया दृष्टिहीन भाइयों और बहनों द्वारा, जो कि एक सफल आंदोलन रहा, लेकिन अंतिम दौर में उस आंदोलन में कुछ कंट्रोवर्सीज पैदा हो गई। वो कंट्रोवर्सीज क्या है हम बात करेंगे। चेन्नई में स्थित हमारे दोस्त, हमारे मीडिया स्पोक्सपर्सन बाला नगेंद्रन हैं और साथ ही साथ एसोसिएशन के एक मेंबर मिस्टर मुर्गम नंदन ब्रदर, वो हमसे बात करेंगे इस विषय में। और हमने इसी विषय के बारे में जानने की कोशिश की पत्रकार मिस्टर सुब्रमणी, जो कि हमारे रेगुलर पैनलिस्ट हैं, उनसे भी। तो साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर रमेश सरीन, जिनको ज्ञान है इस विषय में, जो कि 80 और 70 के दशक में आंदोलनों का भाग रहे हैं, तो क्या कारण होते हैं जब हमें इन आंदोलनों को इनिशिएट करने की जरूरत पड़ती है। बहरहाल आज का टॉपिक चेन्नई में जो रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ चंद रोज पहले, उसके ऊपर बात करेंगे। बहरहाल मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बाला नगेंद्रन, आवर मीडिया स्पोक्सपर्सन फ्रॉम चेन्नई। Bala, welcome. Hi, Danish bro. Hi, listeners. Good evening. Yeah, Bala, welcome. Bala, let's start the discussion. And today, due to some Skype issue and some other issues, we are in this. We'll speak one by one with all the panelists. Okay. So now, first, let's start with you, Bala. What is this protest all about? The protest, actually, bro, is not a recently erupted one. If we think, if we look deep into the thing, the protest has already conducted last year also, with the purpose is to provide appointment to those who cleared the exam, to clear the exam teachers eligibility tests and the exams that are necessary to clear and to enter into the field of teaching profession. Right? There are thousands of postings are vacant that comes under the reservation category. Okay. Specifically meant for PWD and visually impaired. So in that sense, the government has been negligent, not 1 year or 2 years, but it has been continuing for several years. We can say decades. So what happens? Even last year, there has been a protest about it. The same thing. On one way or the other, the people have been ill-treated, or people have been subjected to some policing. Things have gone in that way, and assurance have been given at last. This time as well, there is a strong protest. This time, even we can say very happily that women participation was phenomenal. This with the same reason and 9-point formula, 9-point request. That's what the most important thing of the protest. A 9-point request is what the idea and the core theme of the protest, out of which the appointment
seeking in schools and colleges to the teachers, those who have graduated and cleared the exam. That's what the purpose. Okay. तो बाला हमें बता रहे हैं कि जो टीचर्स को जो खाली असामियां पड़ी हुई हैं, जो खाली पद हैं टीचर्स के, उसको लेकर एक विद्रोह शुरू हुआ है। टीचर जो टेट कट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको भी क्लियर हुआ है। उसके बावजूद रिजर्वेशन कैटेगरी में हमारे पास तमाम वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, तो वो गवर्नमेंट उसे फिलअप नहीं कर रही है। बाला, कैन यू टेल अस विच एनजीओ हैज started this protest and how it came in light, and it was supported by 3,000 people. So how people got together this time? Actually, this time the number has been risen to 3,000. Even we have seen in many articles, it has received media attention as well. That's what the success. If we see the organization that taken this thing into the limelight is College Students and Graduate Association of the Blind, CSGAB, Tamil Nadu. The association that has been the pioneer for the welfare of the visually impaired in Tamil Nadu, and the association that worked for the betterment of the visually challenged in getting the education, employment, and entrepreneur. Yes, Bala. The association that has been working harder for half a decade, or even we can say more than 30 years, for the betterment of the visually impaired in Tamil Nadu in the fields of education, employment, and entrepreneurial skills. So it is also demanding the legitimate, job opportunities that are available for the visually impaired. So this is the organization that has taken this baton of protest. Okay, fine. So, Bala, another question is, I heard now Minister has invited some of the members, and there was a talk, and the strike was called off. The way it is called off, most of even the members of the organization is not happy. Can you throw some light over? When we see, actually, as a person who was covering this issue from outside on behalf of Radio Udaan, I have got the information like, first they had a talk with the minister and the executive members of CSGAB on Monday. On Monday they had a talk, that is 16th March, but that first round talk was unsuccessful and they have continued the protest and hunger strike. And on Wednesday, again the minister, D. Valarmati, has spoken to them, and she has given a guarantee with the resolution that the job opportunities will be provided not only in the government schools and government educational institutions, but also the government aided private institutes as well. So this is the thing that they have expected. However, the protesters and those who sat in the hunger strike and some of the executive committee members are not compromised with the way the government has come to the conclusion. They feel that the government just want to put an end to the protest. They don't want things to go because they are heading just few months, nearly closer to a year to a next state assembly elections. Therefore, they don't want this issue to be sensitized nationwide, or they don't want the issue to be expanded. Hence, the members feel that... Do you have the information that government has promised to fill up the backlog? Actually, the thing that I have received is the secretary and the president of the association have met the minister with the delegation of the executive committee of CSGAB, barring some of the members who have disagreed with that. And they have come to the conclusion that the minister has assured it soon the order will be passed. And there has been a reading that has been made by the minister on behalf of minister about what are the opportunities that they are going to give. Yeah. That's what the information that we have received. But this is a prima facie. Geo is yet to come. Yeah, the government order is yet to come. This is just a prima facie information. We need to wait. That's what the members are saying. Those who haven't compromised, they are saying this is just a stop, not an end to the protest. So they will continue. Okay. तो वहां पर मैं आपको बताता चलूं, हमने कोशिश की थी कि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को बुलाने की, लेकिन एक लैंग्वेज प्रॉब्लम एक आ रही थी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई और कंट्रोवर्सीज ना खड़ी हो, तो उन्होंने प्लेटफॉर्म पे आने से मना कर दिया. दो वी आर कवरिंग दिस इशू. व्हाट डू यू फील? It was a big moment, and I think it was a historic. I never seen in this decade
or the last decade, more than 3,000 people are getting together for a protest. Also, what do you think? Do you have any information? It was supported by central-based NGOs or national-based NGOs, or if it is not, so do you think it should have been supported? First of all, I have spoken to one of the executive committee members, Mr. Divakar, about it, who has been a professor himself. And I have spoken to some of the executive members, even the joint secretary, who has said that this protest has not only begun in Chennai, but began all over the metropolitan cities like Coimbatore, Tiruchi, wherever possible. Finally, it has come to the merge. It has been confluenced into Chennai. That's where we have found the data like 3,000 people have participated who are the members of this association. At the same time, they said like there is no issue of support or assurance of joining together from the other civil representatives who are running the entities nationwide pertaining to the visually impaired. CSDAB is the only organization, even if we look into the medias, the Hindu and Times of India, the publications made with regard to the protest only talks about this association, and none of the association have come forward to that. To me, it should be taken. For example, even I can say like Radio Udaan is the second organization that has taken this issue with CSGAB. So it was not supported by, I don't know why actually. I'm keep repeating and keep telling people to come together, be united, and let's come on the consensus and show the Shakti Pradarshan, so we could develop the pressure, we can put the pressure on government, but it is not happening, the saddest part of the story. Now Bala, what is your closing comment on your views about this protest, the way it was started and the way it was ended, and what you want to demand from the government? Actually, first of all, though I am a non-member of that association, first time I have been attracted by the formulae that they have drafted. This is not like something we are asking a concession or asking a reservation which proves like disabled are the burden to the society as the politicians believe. This is the thing that we are asking to bring legitimacy into the field of employment to the visually impaired. Because we are asking, we have qualified, we have proved that we are deserved, we prove that we are ready to work, but yet we are unable to get the job, unable to get the appointment. That's what we are demanding. That's what the association was demanding. So in that sense, the protest was good. That the purpose of the protest was absolutely good. Only one concern to my notice is the time period through which the protest has begun. Because if you see, though Tamil Nadu hasn't gone to that much of hardest level with regard to health hazards, India is getting swept by the swine flu nowadays. Public interactions, even from the Prime Minister, Health Minister, everybody is saying be cautious when you are doing public interactions, wherever you are in India. So at that time, the protest, when we have begun, that might have created some havoc among the members. We never know the internal conflict, what has happened there. While we are covering, we have received this information as well. And the second thing is, there is a conflict of interest among some members who have spoken to the minister and who haven't spoken to the minister. That is also there. And the third thing is that those who have sat for hunger strike, some of them are saying that the cooperation from the association was pretty good, but the restrictions put on us by the police and the government was something, it is like repressive in nature, which we couldn't bear. That's why the hunger strike has been withdrawn due to some health conditions as well. No health protections have been given to the demonstration, peaceful demonstration. So I feel it should have been done. No one should curb the peaceful demonstration. We are not taking any arms. We are just doing on the peaceful basis. We are doing on the harmonious basis. This protest shouldn't have been withdrawn. Yet it has been withdrawn. It should be focused in future if they are taking the same harmonious way, that the protest has to last longer until a resolution is passed from the government. Thank you, Bala, so much for joining me. Now I'll move to Mr. Murugam Nandan, and we have a journalist, Mr. Subramani. He is also from Tamil Nadu, so he will throw the light on this subject as well. Thank you so much indeed for joining me. Thank you.
रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, the flight of light, world's #1 internet radio station of its own kind। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। जी दोस्तों, तो हमने अभी बात की बाला नगेंद्रन जी से, जो कि हमारे मीडिया स्पोक्स पर्सन हैं और चेन्नई बेस्ड हैं। हमने कोशिश की बात करने की मिस्टर मुरुगानंदम से, जो कि स्कॉलर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्काइप ना होने के कारण या फिर उनकी कुछ अदर प्रॉब्लम्स के कारण वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। यहां पर तमाम सवाल पैदा होते हैं जब हम प्रयास करते हैं इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचाने की, तो ऑर्गेनाइजेशंस क्यों अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती? क्या वो डरती हैं? अगर वो डरती हैं तो किस बात से? क्योंकि अगर कोई शख्स सही काम कर रहा होता है तो उसकी एक ख्वाहिश रहती है बढ़ चढ़कर आगे आने की, लोगों तक जानकारी पहुंचाने की। अगर आप सही नहीं कर रहे तो फिर उस काम के बारे में क्या कहना? हमने इस विषय पे चेन्नई में या तमिलनाडु में तमाम लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन हमें जो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिला। कई लोगों ने इंग्लिश ना आने का बहाना किया, कई लोगों ने कंट्रोवर्सी से बचने का बहाना किया और कई लोगों ने अलग अलग तरह के एक्सक्यूजेस दिए। बहरहाल कई और भी सवाल है। इस प्रोटेस्ट में आपकी राय क्या है? क्या नेशनल बेस्ड एनजीओस को आगे नहीं आना चाहिए? क्या एडवोकेसी के दौर में मूवमेंट्स का वाकई कोई महत्व है? और एक सवाल जो हर बार जहन में आता है कि जब किसी मिनिस्टर से हमारी टॉक्स होती है, हर बार ये इल्जाम लगते रहते हैं कि जब भी मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग होती है तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ही, जो प्रतिनिधि मिनिस्टर के साथ होते हैं, उसका विरोध करते हैं या फिर उससे खुश नहीं होते। इन सवालों को ढूंढना अति आवश्यक है, लेकिन क्या हम प्रयास करते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है जब एक एनजीओ के साथ हम एक विद्रोह में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जब हमारी मिनिस्टर के साथ बात होती है उसके बाद सिर्फ चंद मेंबर जो प्रतिनिधि के साथ मिलते हैं, उनके अलावा मेंबर्स खुश नहीं होते? क्या यहां पर निजी स्वार्थ की भावना आ जाती है या फिर कुछ और? तो ये सवालों के भी जवाब हमने खोजने की कोशिश की सुब्रमण्य सर से और डॉक्टर रमेश सलीम से। तो बहरहाल अब हम बात करते हैं मिस्टर सुब्रमण्य से। Okay, ladies and gentlemen, now I have been joined by Mr. Subramani, regular panelist of our Badalta Daur discussions. He's gonna throw some light over the subject because he has witnessed many moments of blind and he is frequently following the community matters. Subramani sir, welcome. Thank you, Danish. Thank you.
Okay, Subramani sir, first of all, as you know, this protest is going on in Tamil Nadu. So now there was a need of movements in country, but we have seen that's credit goes to Tamil Nadu people who have initiated this movement. First of all, I would like to know your views about the movements has taken place rather in Tamil Nadu. Tamil Nadu has been very strong for in terms of advocacy, and they've come out and proved it once again that the community can sort of stand up for itself, which is a very good sign. And I also understand that the government has called the protesters for talks, which is a good sign, you know. Subramani sir, this is the first moment we have witnessed where more than 3,000 people have joined hands with the students. So how big, this opportunity in your words, and how big? I think it's historical. The very fact that there are 3,000 people. I've seen some protests in Chennai, because I was based in Chennai for a long time. It used to be very small, and it used to be very token protest. I've never seen a protest of this scale. So it is definitely encouraging, because there are a lot of people who care about blind issues. So yeah, it's a very encouraging sign. Okay, I have now two counter questions. Okay. One, I would like to know, now we are witnessing. Actually, I have invited some members from the same organization, and because there is a situation is a bit controversial, so they don't want to come up. So they don't want to create any other controversy. So my question is, when we have seen this sort of big movement in Chennai, and the people even the mainstream people are joining them. Now the internal war, how big, government needs it, and they got it. So in this, how we can get away from, what should we do to get away from such things, because there is no consensus now in the organization. So on the one hand, we were moving very good, and second time we ourselves has demolished this movement. So what is your take on it? I think it is like going one step forward and getting back two steps backward. I think there are a lot of internal issues that needs to be sorted out. One is, I think we should speak in one voice. I think that has been our main problem. I'm not blaming anybody in particular, but I think one person should take the leadership and others should follow. And secondly, whoever is taking the leadership should take the community along with him. Communication is a problem, I guess, because whoever has gone to talk to the government should be able to brief everybody else, take the consensus, and then act according to the consensus. Because it's not something. It's a community issue. It's not a single person's issue. So we should not be doing anything hastily. You are saying maybe the lack of experience is the problem, and the lack of communication is there. Absolutely. I think both are very important, because we need an experienced leadership. Okay. Subramani sir, why government is not sensitive towards disabled people? What is their big problem? We are just keep shouting, but they are not going to be sensitized. They are not becoming sensitive towards disabled people. What do you think? No, actually, some time back I made a comment in Access India. I was reprimanded for that. But I'll tell you the exact. Yeah. I think I have lost the line with you.
Okay, so I made this comment that when a chief minister of a state starts using wheelchair, the government becomes disability sensitive. Before that, the government was not. So, frankly, the way our governments function is mostly top-down approach. The leader decides what needs to be done, and the people below him follow that. Unless the top leadership is sensitive, we don't really see changes happening, and especially Ji, go ahead. yeah. So especially this government, we have the kind of ministers who have absolutely no idea of disability. See, the idea of disability is very simple. These are all ministers who come from rural areas, people who have no experience working with the disability community. Even the social welfare minister, I think I'd like to point out, hasn't had any experience with disability. So you can't expect anything better from these people. No, they have to first work with disability, understand disability. As you said, you are basically you are based in Chennai, in Tamil Nadu. So I heard Karunanidhi was a good leader from the perspective of disabled people, and this government is ruthless. Do you agree? Exactly. No, that's what I said. See, Karunanidhi, he was confined to wheelchair between 2006 and 2011 when he was in power. Due to old age, he started using wheelchair. Only after that, DMK became more sensitive, and they established a disability department. They started doing a lot of things which are disabled friendly. Okay. Which was this government. Nobody knows anything. The problem is they don't know anything about disability. Most of the governments are like that only. Yes. Okay. Let's talk about the demands put forward by our community fellow members. So, do you think these demands are appropriate? And yes, they have the degrees, they have the test, all the tests have cleared. The job should be given to them. Absolutely. Why should not be they given? I mean, they should be given. There is a reservation, which is actually in place. I think it's unfortunate that they have to fight for something which is already sort of accorded or given to them. This shows that our community is sort of not getting the due recognition they should, and let's not forget that they've worked hard for these things. I mean, I know for a fact that they stay in hostels, government hostels in Chennai. I've visited a couple of them. Extremely worst and bad conditions, and they don't have anywhere else to stay. So they have to stay in such hostels. They have to endure a lot of challenges to sort of pass these exams, get themselves qualified. The only hope for them is that they will get a job and stable income and financial stability. Unfortunately, if that is going to be a difficulty, and if they have to fight for such a basic thing, it doesn't really show the state in a good light. Yeah, Subramani sir, now the question, let's talk about the national based NGOs. So when we have, the time from last year I have started this program, I'm keep shouting on Radio Udaan. Whenever there is a moment, it's a matter of whole community. Why our national level NGO do not support, even they are not aware what is going on when it's Tamil Nadu, this protest is going on. Don't you think all the NGOs, especially national based NGOs, should go forward and support the fellow members? They should go, and if the mainstream 3,000 people are getting together, so let's go 2,000 or 5,000 people. We can also go and support them. I think we have to be better organized, number one. Number two, I think that the centralized and national level NGOs should show greater level of awareness and understanding of local issues, because what is happening in Tamil Nadu is, though it has got a national sort of relevance, it is still a local issue, and there is a need for unity. I don't know. I think they should be able to do it, and frankly, I'm also puzzled. I don't understand why differences crop up. The problem with us, Subramani sir, we are keep repeating the very fact that government should be sensitized. I think before that our community has to be sensitized as well. What do you think? I think yes, that we have to first realize one point.
united we stand, divided we fall. We really have to understand that only a greater level of unity and support is going to get us further in our struggle, because I don't honestly see that one person or one small number of people can sort of put up with a big government. So that's important. Yes. Yeah. So Subramani sir, before I leave you, I need your closing, and before that, I want to tell you, when I had I think you are a part of that panel when we have a discussion of Assam blind school violence issue. So I was Yes. a lot of people called me and said, thank you so much. At least you people have started talking about the Northeast region. I think it's not the credit goes to Radio Udaan, but it is a responsibility of each and every person to cover up all the issues wherever it is. What do you think? And your closing comment. No, definitely. I feel that Northeast is very much a part of India. I think one of the problems, even in a mainstream, in a governmental level, we don't really show that sort of understanding and empathy and sensitivity towards Northeast. I think that's a mistake that we do. At least that mistake is it should be corrected. When it comes to blind issues and the community, the blind community. So. Your closing comment on Chennai issue. Is that on Chennai issue is that it is a victory of sorts, but converting that victory into a reasonable and as an achievement it depends very much on our community. Ji. We have to stand united, firm, strong, and also show to the government that we are not asking for charity. This is our right. Ji. Thank you so much, Subramani sir, for joining me, for sparing your valuable time. Thank you very much, Danish. Thank you. Bye. Thank you. जी, मैं माफी चाहता हूं, मैंने चेन्नई का नाम लिया। जी बिल्कुल, हम बात करें तमिलनाडु की, तो चेन्नई इज अ पार्ट ऑफ तमिलनाडु और हम तमिलनाडु का जो मूवमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। हमारी लाइफ में अंकों का बड़ा महत्व है। इंडिया ने रंग कितने बनाए, हमारी सरकारों को वोट कितने मिले, और सबसे बड़ी बात, पेपर में नंबर कितने आए। बात करें तो इसमें होता है काउंटडाउन। ऐसा ही एक यूनिक काउंटडाउन आ रहा है रेडियो उड़ान पर, उड़ान टॉप 10। अब बाद में आएगा संडे से ठीक शाम को 7 बजे रिलीज होगा। मंडे को इसमें होगा साथ में आप जरूर तो बड़ी आवाज हो, ये बेहतरीन गाने होंगे, तो बस कहीं पे नोट कर लो, चाहे दिमाग में छाप लो। और अभी सुनो रेडियो उड़ान और संडे का संडे को मिलेंगे हम रात Welcome to the world of invention, creativity and discovery. Here's an opportunity for all of us to explore the ocean of knowledge. This show is all about emerging trends in science and technology, math, quiz, facts and much more. So friends, get ready to listen Tech Toast with Science Spread with your RJ Vidya only on Radio Udaan every Monday from 7 to 8 p.m. and rebroadcast every Tuesday from 2 to 3 p.m. सुब्रमण्य सर से बातें करके हमें कई चीजों का पता लगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आया कि जब करुणानिधि हैंडीकैप्ड हुए तो उन्हें डिसेबिलिटी का एहसास हुआ, लेकिन हम तो कामना नहीं करते कि हर किसी को डिसेबल होने के बावजूद ही इसका एहसास हो, जबकि पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेंसिटाइज नहीं होती। चेन्नई में जब तमिलनाडु में इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, फिर इस तरह से उसको कोल्ड ऑफ कर देना कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों के लिए निराशाजनक था। लेकिन क्या गवर्नमेंट का ऑर्डर अब हमारे दृष्टिहीन भाइयों और बहनों के पक्ष में आएगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर गवर्नमेंट ऑर्डर हमारे फेवर में नहीं आता है तो क्या हम एक बार दोबारा संगठित होकर इसके खिलाफ लड़ेंगे? क्या ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहरहाल हमने बात करनी चाहिए
डॉक्टर रमेश सरीन से, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि उनको काफी एक्सपीरियंस है मोमेंट्स का। तो जी दोस्तों, जैसे कि वादे के मुताबिक मैंने आपको प्रोग्राम की बिगनिंग में ही कहा था कि डॉक्टर रमेश सरीन, जिनको कि 70 और 80 के दशक में मोमेंट्स का काफी एक्सपीरियंस है, तो हम उनसे भी बात करेंगे आज के मोमेंट्स को लेके। तो सरीन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स जी, और मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर रमेश सरीन ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है सत्यवती कॉलेज में, और साथ ही साथ ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो सरीन सर, जो चेन्नई में इतना बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला, तो ये इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, शायद आपको याद होगा, आपके कुछ कार्यक्रम पहले इस बात पर विवाद था कि क्या केवल मूवमेंट से ही समस्याएं हल हो सकती हैं या हमें एडवोकेसी के और रास्ते अपनाने चाहिए। जी, मैंने तब भी कहा था कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, एडवोकेसी के हम जितने मर्जी रास्ते अपना लें, सीधे साधे ढंग से कभी भी सरकारी तंत्र आपको रोजगार देके एक कामयाब व्यक्ति देखना नहीं चाहता। तो ये चीज दिखानी पड़ती है और छीननी पड़ती है। जी। सरीन सर, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इससे पहले हमारी मुर्गम नंदन जी से बात हुई और बाला नगेंद्रन, जो कि चेन्नई पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे, और साथ ही साथ हमारे डेक्कन हेराल्ड के सब एडिटर सुब्रमण्य जी से बात हुई। तो इस मूवमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो अंतर्गत ही मतभेद पाए जा रहे हैं, जिस तरीके से इस स्ट्राइक को कॉल्ड ऑफ किया गया, तो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे मेंबर खुश नहीं हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि सरकार के साथ क्या बात हुई है। तो इस तरीके में, जबकि इस मूवमेंट ने बहुत ज्यादा काफी इसको लोगों, मेन स्ट्रीम लोगों का भी साथ मिला था, उस सूरत हाल में जब इंटरनली मतभेद पैदा हो गए सोसाइटी में और ये खुश नहीं है काफी मेंबर्स जो मिनिस्टर से टॉक सही, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि आंदोलन की सबसे नाजुक कड़ी जो है वो है समझौता। और समझौता का सीधा मतलब है कि आप सबको खुश नहीं करते। अब कई बार ये भी होता है कि समझौते के नाम पे लीडर बिक हुई जाते हैं। जो 1980 से लेके आज तक के टोटल आंदोलनों को देखा जाए, तो ऐसे उदाहरण मैं बगैर नाम लिए कह सकता हूँ कि कम नहीं। लेकिन मैं इस बात से भी बिल्कुल एग्री नहीं करता कि कंकड़ पत्थर के जोड़ की तरह आप इंसान में यूनिटी की कल्पना करें, कि वो यूनिटी हमेशा खतरनाक है जिसमें इंटरेक्शन का रोल खत्म कर देंगे। अगर लोग कहीं आपके उठाए गए कदम से विरोध में है, तो मैं तो इसे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप देखता हूँ। तो आंदोलन कभी खत्म नहीं होता, एक प्रोसेस है। हम कहीं ये समझ लें 7 दिन भूख हड़ताल पे बैठ के, और जो बैठ गए उनको मिनिस्टर ने जूस पिला दिया और भूख हड़ताल खत्म हो गई, तो कहानी ओवर। ऐसा कभी नहीं, एक लंबी प्रक्रिया है। अगर हमारे अपने ही देश में दृष्टिबाधितों के आंदोलन को उठाइएगा, तो 1980 का जो मुखर होकर आंदोलन सामने आता है, वो ना करके भी 12 साल की लंबी प्रक्रिया का प्रतिफल है जी। उसे चाहे 1969 में चलाई गई भूख हड़ताल आंदोलन से ले लीजिए, जो WCWB के सामने हुआ था जी, या 1973 में NFB द्वारा गुड पॉलिश मूवमेंट से जोड़ लीजिए, या 1978 में MBYA ने जो एक जेल भरो अभियान के तहत आंदोलन किया था, उससे जोड़ लीजिए। वो सब एक कड़ी थे। और हम आमतौर पे करते क्या कि वो जो परिवर्तन होते हैं उनको देखते नहीं है। अब फल जो आता है ये मान लेते हैं कि सारे फल हमारे लिए आए। ऐसा कभी नहीं होता। मेरी समझ में कोई भी आंदोलन इस दुनिया का अंतिम आंदोलन नहीं है। जिस दिन अंतिम हो जाएगा, करने को रहेगा क्या? जी सरीन सर, एक बात है कि जिस तरीके से ये मूवमेंट शुरू हुआ, हमने देखा कि 7 लोग, फिर उसके बाद हजारों की तादाद में 3000, आई थिंक ये हिस्टोरिक मूवमेंट है जिसमें 3000 से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन इस तरह का कंफ्यूजन मुझे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि कहीं ना कहीं जो लोग टॉक्स के लिए गए थे, तो उन्हें टेम्पटेशन का एक अपनाया गया है जो तरीका, जो लालच दिया गया किसी तरीके से,
तो बहुत सारे मेंबर सेटिस्फाइड नहीं। क्या कारण है कि हमारी कम्युनिटी में ही ऐसे मतभेद पैदा हो जाते हैं, जबकि हम बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेशर क्रिएट करने की ओर बढ़ते हैं सरकारों पर? देखिए, हम असल में ह्यूमन साइकी से बहुत दूर भाग जाते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि अचानक ऐसा क्यों हो गया। आप जितने भी आंदोलन उठाइए विश्व के, कमोबेश हालत में लीडरशिप, अगर वो आंदोलन एक्सट्रीम नहीं है तो लीडरशिप बिकती ही है। समझौते का मतलब ये कुछ तुम झुको कुछ मैं झुको, ये कोई रेवोल्यूशन तो है नहीं कि रेवोल्यूशन करके एक लीडर आ जाए और बाद के देश को चला ले। इट्स अ मूवमेंट, और मूवमेंट और रेवोल्यूशन के बीच के अंतर को हमेशा समझना चाहिए। हम इतना घालमेल करते हैं कि मूवमेंट को रेवोल्यूशन समझ लेते हैं और ये मान लेते हैं एक बार हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद किया तो जिंदगी खत्म हो, आगे कुछ करने को रहा ही नहीं। ऐसा कभी नहीं है। 3,000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ी बात जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक बात है कि हम 3,000 को सडनली 7 दिन के अंदर जोड़ के कैसे लाए और क्या हमने उनके बीच को तालमेल बैठाया। मुझे याद है वो 80 से लेकर 83 के दिन जब पूरा हिंदुस्तान कम या ज्यादा मात्रा में दृष्टिबाधितों के आंदोलन से जुड़ा हुआ था, और तब भी सडनली आंदोलन समाप्त हुआ। यू कैन टेक द केस ऑफ ए मूवमेंट फ्रॉम 1 अगस्त 1980 टू 5 अगस्त 1980। किसी को नहीं पता था क्या समझौता हुआ, क्या वाकई में होने वाला है, सिवाय एक गोलमोल डॉक्यूमेंट के। अगर उस समय का डॉक्यूमेंट जो लेबर मिनिस्ट्री के साथ समझौता हुआ था उठा के देखेंगे, इट गिव्स नथिंग, लेकिन समझौता खत्म हो गया मूवमेंट। मे बी शायद इट माइट हैव रीच्ड अप टू द यार्डस्टिक ऑफ दी द लीडरशिप, लेकिन मिला क्या? वो कुछ गिने चुने जो एक्टिव थे वो नौकरियों में लग गए, बाकी देखते रह गए। पर क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटाइज हो चुका था समय, तो जनवरी में फिर आंदोलन हुआ, 26-25 दिन तक चला, फिर बंद कर दिया गया। तो ये मैं मानता हूँ एक दिन का खेल नहीं है, हमें इसको इतनी भी घबराना नहीं चाहिए। आज 3,000 की संख्या संभव क्यों है, इसको टेक्नोलॉजिकल व्यू पॉइंट से देखिए। जिस जमाने में हम आंदोलन करते थे, एक गली में एक फोन हुआ करता था। तो मुझे याद है मेरे घर में फोन नहीं था, मूवमेंट में लिंक जोड़ने के लिए मेरे पड़ोसी का फोन आता था, मुझसे बात करते थे, फिर मैं कहीं जुड़ने के लिए जाता था। अब आज क्या, आप यहां से सीधा अमेरिका फोन कर लेते विद इन नो टाइम। तो वो कम्युनिकेशनल डेवलपमेंट को हम डिनाई नहीं कर सकते। ये जरूर है, इसको एक दूसरे एंगल से ले, आज के एलियनेबल युग में जहां पड़ोसी को पड़ोसी की चिंता नहीं, उस हालत में अगर ये लोग जुड़े हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सर, एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट है और इसी के साथ ही मैं चर्चा को समाप्त भी करना चाहूंगा। मैं 2-3 क्वेश्चन आपके पास क्रिटिकल छोड़ना चाहता हूँ। ये बहुत एक लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि जब फीमेल, खास तौर पे हमारी सोसाइटी की जो नेत्रहीन बहनें हैं, वो भी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। सरकार को हिला दिया है इस मूवमेंट ने। इस मूवमेंट्स में कि क्यों हमारी जो सेंट्रल बेस्ड एनजीओस हैं, और या फिर उसे हम नेशनल बेस्ड एनजीओस कह रहे, तो वो इसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। दूसरी बात कि क्यों गवर्नमेंट हर बार सेंसिटाइज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले कहा कि आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करो तो फिर हम आपको जॉब देंगे, फिर हमने टेट भी क्लियर कर लिया, उसके बाद भी हमारा बैकलॉग भी खाली है। क्यों गवर्नमेंट सेंसिटाइज नहीं है? और जबकि मेन स्ट्रीम के लोग इसमें जुड़ रहे हैं, तो अपने ही लोग हमारे तो हमारी कोई नेशनल बेस्ड एनजीओ सपोर्ट नहीं करी है, बी कि हमारे जो अंदर कंट्रोवर्शियल अब सिचुएशन पैदा हो कि सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इतने मतभेद पैदा हो गए कि बहुत सारे लोग खुश नहीं है इस कोल्ड ऑफ से स्ट्राइक जो जिस रूप में हुई है। हालांकि अभी जियो गवर्नमेंट ऑर्डर आना बाकी है। तो इस होल प्रोस्पेक्टिव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात आप एनजीओ की कह रहे हैं, एनजीओ शब्द से ही ले लीजिए कि वो क्यों नहीं जुड़ रहे। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट लेती है लेकिन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं देती। जो भी लेन देन का सवाल उठा तो लड़ेगा कौन? इसीलिए मैं एनजीओ और प्रेशर ग्रुप में फर्क मानता हूं। प्रेशर ग्रुप की तरह जब तक ब्लाइंड खुल के सामने नहीं आएगा, एनजीओ कैन बी ए सिस्टम टू बैकअप द प्रेशर ग्रुप। एनजीओ अगर अपने हाथ में लीड लेगा तो वो तो कहीं ना गवर्नमेंट से एक प्रोजेक्ट के नाम पे या दूसरे प्रोजेक्ट के नाम पे बहकाव कर लेगा।
वो अल्टीमेटली आपको बहुत बड़ी चीज नहीं देने वाला है जब तक कि आप एनजीओ की बात सुनना मना करके सामने ना आ जाए। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे बात साफ हो जाएगी। मुझे याद है 1985-86 के आंदोलन में इस बात पर डिबेट हो गई थी कि हम प्राइम मिनिस्टर को घेर लें। एनजीओ का कहना ही था ऐसा ना करें, क्योंकि उनका जो है हर्ज होता था, उनको प्रोजेक्ट कौन देगा। लेकिन हम कुछ यंगस्टर्स इस बात में तुल गए कि हमें राजीव गांधी को घेरना ही और तभी टेबल टॉक करवाना है। अल्टीमेटली वी जस्ट गेट आउट हिम ऑन द रोड, जिससे फोर्स हुआ कि टेबल टॉक किया जाए। अब इतनी ताकत रखते तो कीजिए, और ये एनजीओ नहीं रख सकता, प्रेशर ग्रुप नहीं रखे। और जो आप डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, मैं डिफरेंसेस को हमेशा पॉजिटिव वे में लेता हूं, और मेरा मानना यह है कि जब तक ये आंदोलन लगातार नहीं चलेंगे, जो लंबा गैप है, ये लंबा गैप नए अनुभव की देन बनेगा, मेरा ये मानना है। थर्डली मैं ये भी मानता हूं कि वीमेन पार्टिसिपेशन बढ़ जाने से ऑब्वियसली एक इमोशनल कलर तो मिलता ही है मूवमेंट को, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि मूवमेंट को कितना दूर तक और किस किस को संतुष्ट करके चलाएंगे। क्या मूवमेंट अल्टीमेट है, लास्ट है, इसका कोई मूवमेंट होना ही नहीं है। अगर ऐसा है तो मूवमेंट को या तो उस तरह से ले जाइए तो 150, 200, 300 दिन चले और उसमें गवर्नमेंट डिफेम हो सके। जब तक गवर्नमेंट को डिफेम होने का डर नहीं है तब तक वो आपके लिए कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि आप माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी स्कैटर्ड माइनॉरिटी है, जिसके लिए वोट बैंक उनके आप बन नहीं सकते। और जब वोट बैंक नहीं बनेगा आपकी सुनेगा कोई क्यों। जी, तो मैंने हालांकि कोशिश की थी सेम एनजीओ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव को बुलाने की, तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्सीज है, हम नहीं चाहते कुछ ज्यादा कंट्रोवर्सीज बने, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। हालांकि हमने कुछ मेंबर्स को सफलतापूर्वक बुलाने की कोशिश की, हमने कोशिश की जितनी हम कर सकते थे। तो सरीन सर, इस पूरे आंदोलन पर आपके क्लोजिंग कमेंट क्या रहे? देखिए, मेरी बहुत सीधी सी राय ये है कि जो आदमी डरता है कि यहाँ झगड़ा होगा, वहां तनाव होगा, वहां डिफरेंसेस होंगे, वो आदमी आदमी ही नहीं है। डर के साए में जीने वाले आदमी को आदमी नहीं मानता। अगर आप तनाव को जीना सीखें और तनाव में स्वयं को संभाल कर उससे बाहर निकल पाए, विरोधों को बैठ के रिजॉल्व करने की ताकत रखें, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि कल का जो समय होगा, आने वाला समय, इन्हीं आंदोलनों करते करते एक सकारात्मक समय हो सकता है। मेरा अल्टीमेटली मानना यही है कि ये कोर्टबाजी या एडवोकेसी या यहाँ समझाना वहां समझाना, वो दिन अब लग गए। जब तक इनको इनकी औकात नहीं दिखाई जाएगी मिनिस्टर्स को, तब तक कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं निकल सकता। और मैं मानता हूँ वट एवर तमिलनाडु हैज डन, वो एक अप्रिशिएबल स्टेप है। सफलता हो या ना हो, मैं केवल इस लास्ट कमेंट से अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरी नजर में हमेशा से ये रहा है कि एवरी डिफीट इज नथिंग बट अ स्प्रिंग बोर्ड ऑफ विक्ट्री। तो डिफीट को उस ढंग से ले, और आने वाला कल मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, इट में टेक 10 years और 20 years और मे बी 30 years, आने वाला कल दृष्टिबाधितों का अपना कल होगा, जिसमें बार बार कोई किसी नहीं कहना पड़ेगा नौकरी दे। यू विल हैव टू फोर्स दैट। जी, सरीन सर, आपने अपना कीमती समय दिया, और मैं आपको बताऊं कि सरीन सर इस समय लखनऊ में अवेलेबल है, वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। आपने इस आंदोलन के टॉपिक पर अपनी राय रखी। सरीन सर, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माय ऑनर, थैंक्स अ लॉट। और दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम बदलता दौर, कुछ डिफरेंट शेप में, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम हिंदुस्तान के किसी भी कॉर्नर में जो हमारे भाई बंधुओं के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक हो, उसकी एटलीस्ट नॉलेज आप तक पहुंचाएं, और कोशिश करें कि क्या चल रहा है हमारे समाज के, उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। तो बदलता दौर को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और YouTube पर आप बिल्कुल हमारे शो सुन सकते हैं, जस्ट टाइप करें रेडियो उड़ान बदलता दौर डिस्कशन, तो आप हमारी तमाम डिस्कशन को YouTube पर सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के एपिसोड तो डॉक्टर रमेश सरीन से बात करके भी हमें कई बातों का पता लगा। देश में प्रेशर ग्रुप की जरूरत है,
लेकिन वो प्रेशर ग्रुप बनाएगा कौन? क्या रेडियो उड़ान प्रेशर ग्रुप का काम करेगा या फिर तमाम एनजीओस खुद आगे बढ़ेंगी? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। रेडियो उड़ान पर हम बदस्तूर ऐसे टॉपिक लाते रहेंगे, आपकी राय व्यक्त करते रहेंगे। तो इस बार की डिस्कशन में हम बदलता दौर में हमने कोशिश की तमिलनाडु में जो विद्रोह हुआ उसके बारे में आपको बताया जाए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और साथ ही साथ है जो रिक्वायर्ड एजुकेशन पूरी करने के बावजूद गवर्नमेंट बैकलॉग नहीं भर रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स बार बार आते रहते हैं और तमाम सरकारों को बताते हैं कि आप बैकलॉग को फिल करें, लेकिन हर जगह हाल में उसी भरा है। कब ऐसा दिन आएगा जब गवर्नमेंट खुद ही सेंसिटाइज्ड होगी और गवर्नमेंट विकलांग समाज को समझना शुरू करेगी? कब हम मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनेंगे? या फिर जब तक हम वोट बैंक नहीं बने तब तक इसे अचीव करना मुश्किल है? अगर हमें वोट बैंक ही बनना है, क्या हम कभी बन पाएंगे? क्या कभी हमारी एनजीओ स्टेट लेवल और सेंट्रल बेस्ड में मतभेदों को बुलाकर एक शक्ति प्रदर्शन हिंदुस्तान में देखने का मिलेगा? इन तमाम क्वेश्चंस को मैं आपके सामने छोड़े चलता हूं और फिर किसी दिन इस पर विस्तार पूर्वक आपसे मुलाकात होगी, आपसे बात होगी। बहरहाल आज की डिस्कशन में सिर्फ इतना ही। अब इसके बाद हमारा प्रोग्राम 20 सवाल, आई थिंक माफी चाहता हूं, 20 सवाल नहीं, अनगिनत सवाल। वर्ड मास्टर एक नया शो आज शुरू हो रहा है आरजे आशीष जी के लिए, जो कि हमारे गेम खिलाने के एक एक्सपर्ट आरजे माने जाते हैं। तो वर्ड मास्टर क्या है, इसमें आप स्काइप चैट्स की तरह, मिसेस कंफ्यूजन की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपके चैट्स का हमें इंतजार रहेगा। आपको छोड़े चलते हैं वर्ड मास्टर आरजे आशीष सिंगला जी के साथ। और आपको यह भी बता दूं कि मिसेस कंफ्यूजन का समय चेंज हो गया है, हर शनिवार 9 से 10 बजे रात को आता है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करना मत भूलें। बहरहाल आज के प्रोग्राम बदलता दौर में मुझे दीजिए इजाजत। हैप्पी लिसनिंग, स्टे कूल, स्टे हेल्दी, बाय बाय। मैं आरसी मोनिका करूंगी आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद और बनूंगी आपकी सहभागी आपकी सक्सेस में। लाऊंगी आपके लिए जीके से जुड़े अनछुए पहलू और शेयर करेंगे हम ज्ञान को। यस फ्रेंड, मैं आरसी मोनिका ला रही हूँ आपके लिए ज्ञान से सराबोर एक एजुकेशनल प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स एंजॉय 2020 एवरी मंडे एट 10 to 11 p.m. and repeat broadcast on Tuesday 5 to 6 p.m. only on Radio Udaan. एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत, और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudaan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ।